Hello everybody. So this is our continuation of F5 LTM and we have started like NAT part. Okay. So we have covered like types of NAT and yesterday we have covered like SNAT type auto map and which was very important concept and widely used that NAT concept in F5 LTM. Okay. So this session is about SNAT pool list. So SNAT pool is also the type of SNAT. Okay. So in this session, we'll cover SNAT pool. And so on study sessions, I have already explained like why SNAT pool is used. So if you're watching this session first time, I will suggest to please watch one by one, like from beginning. Okay. And yes, guys, this session is totally free and I'm going to cover from beginner to advanced level, which I'm covering. Okay. So the people who is watching, maybe they notice it. Okay. So SNet pool guys comes in the picture. For example, some there is some applications which is hosted behind our A5 load balancers, and that application has huge traffic. Okay, coming from the internet. Maybe for example, consider Facebook.com, YouTube.coms. These are the applications. The millions of people's access within a minute, seconds, right? So for that types of traffic, single IP that is auto map, SNet auto map is not sufficient. Okay, for that we need to use SNet pool where we can define the pool of the IP. Okay, because one IP has only capacity to handle 64,000 connections. Okay, not more than that. So for that we need to configure SNet pool. Um, Generally we pool taken from the ISP if you want to keep public, and maybe you can keep private also. It depends upon your company design. So once we create the pool, when a pipe is going to communicate with backend server, it is going to take that IP from the pool list and as a source, and it will communicate to the backend server. Okay. So जब आप pool define कर दोगे guys, so जब backend server से communication होगा A5 का, so A5 is going to take the IP from the pool and then it is going to communicate to the backend server. And one IP has the capacity of 64,000 connections. तो अगर आप pool define करते हो and the applications which is hosted behind our A5 had the connection count maybe more than 64,000 because that application is widely used in your company. So वहां पर आपको SNet pool डिफाइन करना पड़ेगा गाइज. ओके, सो आई होप कि SNet pool के बारे में आपको आइडिया मिल गया होगा. ओके, लेट्स मूव ऑन द लैब गाइज एंड उसके बाद में हम लैब में इसको देखते हैं. ओके, सो लेट मी लॉग इन टू आवर A5 एंड देन विल परफॉर्म द टास्क. ओके. Okay, and before that I need to you know uh, configure the default gateway, because yesterday we have removed the default gateway from this router which we have made it HTTP server. So यहाँ हमने रिमूव किया था गाइज. तो मैं क्या करता हूँ कि हम यहाँ से वो कर देता हूँ गाइज, इसका डिफॉल्ट गेटवे सेट कर देते हैं. बिकॉज अगर आपके सर्वर को बैकएंड सर्वर को डिफॉल्ट गेटवे नहीं है, दैट इज ओनली सक्सेसफुल इन केस ऑफ ऑटो मैप. लेकिन अगर आप एसनेट पूल कॉन्फ़िगर करते हो तो आपको डिफॉल्ट गेटवे चाहिए टू दैट राउटर, दैट सर्वर विच इज होस्टेड बिहाइंड योर F5. हमारे केस में राउटर है, उसको हमने HTTP सर्वर बनाया है. कंपनी में एक्चुअल सर्वर होते हैं, एक्चुअल एप्लीकेशन होस्टेड होते हैं. ओके, परफेक्ट. ओके गाइस, तो मैं इसका डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर देता हूँ. जस्ट 1 मिनट. इट विल बी टुवर्ड्स आवर LTM 192.168.1.100. Let me check first. So IP route. So at the moment there is no any default route. So let me configure it. So IP route and 192.168.1.100. Perfect. So now I have configured the default route, and now we'll go to the F5 load balancers. It's license warning. That is fine. It is going to expire in 3 days. That is fine. I will renew it. So for that we need to go on the guys
लोकल ट्रैफिक, आपको एसनेट पुल कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको एड्रेस ट्रांसलेशन में जाना है और यहाँ पर एसनेट पुल लिस्ट क्रिएट करना है. सो एट द मोमेंट देयर इज नो एनी एसनेट पुल लिस्ट, हम क्या करेंगे गाइस, क्रिएट करेंगे. ओके, एंड वी कैन गिव नेम हियर लाइक एसनेट डैश पुल, यहाँ पर नाम दे देते हैं. आईपी एड्रेस हम जस्ट दिस इज लाइव इन्वायरमेंट, तो हम मान के चलो ये हमारा पब्लिक आईपी 2.2.2, एंड देन मान के चलो 3.3.3, और एक और ले लेते हैं 4.4.4. ओके, सो ये हमारा पब्लिक पूल है, या आप ये बोल सकते हो एसनेट पूल मैंने दे दिया 2.2.2, 3.3.3, 4.4.4. सो जब भी ये 5 बैकएंड सर्वर से कम्युनिकेट करेगा, तो कभी 2.2 को एज ए सोर्स लेकर कम्युनिकेट करेगा, कभी 3.3 को लेकर, कभी 4.4 को लेकर के. सो डिपेंड्स अपन द डिजाइन गाइज, आप उसके अकॉर्डिंग पूल डिफाइन कर सकते हो. ओके, देन वी नीड टू फिनिश हियर. ठीक है गाइज. So we have configured the SNAT pool, and then we need to go on the virtual server, and I will try to show in the wire circle, so don't worry about it. Then we need to go on the virtual server here, guys. And पहले मैं क्या करता हूँ, शायद मैंने pool को वो किया था guys, disable. Let me enable it, and yeah, member, yes. तो हम क्या करते हैं, इसको enable कर देते हैं guys. Okay, ठीक है. And if you go on the virtual server, so हमारा HTTP virtual server है guys. एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर हम यहाँ पर आते हैं गाइस, देखिए यहाँ पर हमने ऑटो मैप कॉन्फ़िगर कर कर रखा था कल के लिए, कल के सेशन में. टुडे विल कवर एसनेट, एंड इन एसनेट पूल वी हैव क्रिएटेड एसनेट पूल, दैट्स इट. इसके बाद में आपको क्या कर देना, अपडेट कर देना है. ओके, सो इट्स अपडेटिंग गाइस. परफेक्ट. नाउ वी नीड टू गो ऑन द दिस पीसी. लेट मी लॉग इन टू दिस पीसी. Or maybe this PC we can try from anyone, because I think gateway we have already configured. And from here, let me access the virtual server, and then we'll try to do capture and see like which IP is hitting while communicating to the backend server. Okay, guys. So HTTP, that's perfect. Perfect. Admin 1 2 3. See, if you do like this, guys, अगर अपने से खुद से आप डिजाइन करते हो, ट्रबल शूट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, देन इफ यू वर्क इन एनी कंपनी एंड आपको इस टाइप को वर्क मिलते हैं, प्रोजेक्ट मिलते हैं, सो एट दैट टाइम्स यू डोंट नीड टू वर्क मच. आप मैक्सिमम चीज़ आप इजीली कैच कर पाओगे, एंड देन वी कैन स्टार्ट डूइंग implementations and troubleshooting also, because you have designed it, so we know where is the route, where is the IP address, what is the IP schema, everything we know, right? So I will suggest always try to implement lab, do some troubleshootings, आप अपने से करो, and then um, do the testing and all. So perfect. So अभी मैं इसको, okay, so now it's load balancing. So that perfect. तो अभी मैं क्या करता हूँ guys, यहाँ पर कैप्चर करते हैं, कैप्चर. एंड वी आर नॉट श्योर कि कौन सा सर्वर को हिट करेगा, बिकॉज वी हैव इनेबल ऑल द बैकएंड सर्वर. तो मैं यहाँ पर 1/1 पोर्ट पे कर लेता हूँ. ओके, परफेक्ट. सो आवर गोल इज for this session is like when F5 is going to communicate to the backend server, it is going to take the IP from the pool which we have configured as a SNAT pool. Okay, let me initiate the traffic. Okay guys, so now आपको अभी थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा. देखो guys, so now अगर हमारा F5 बैकएंड सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा था, जो हमने पूल डिफाइन किया था 2.2.2 का, 3.3.3 का, 4.4.4 का, सभी ये जब बैकएंड सर्वर सर्वर 1 से कम्युनिकेट कर रहा है, इट्स टेकिंग सोर्स आईपी 2.2.2.2 while communicating with the backend server. एंड बैकएंड सर्वर किसको रिप्लाई कर रहा है, 2.2.2 को. एंड अगेन इट इज गोइंग टू ट्रांसलेट एंड सेंड बैक टू द क्लाइंट विच इज सीटेड ऑन द इंटरनेट. ओके, सो दिस इज हाउ एसनेट पूल वर्क इन ए 5 एलटीएम गाइस. ओके, हम इसका स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं. अगर हम इस पीसी पर जाकर ट्राई करेंगे, तो मे बी इट विल टेक अनदर पूल आईपी. लेट मी जस्ट,
अगर यहाँ से हम ट्राई कर देंगे गाइस इस पीसी से, तो मे बी इट विल हिट अनदर पुल, और मे बी पुल आईपी और सेम पुल आईपी. Perfect. So let me log in. Perfect. Okay, guys. So let me again here, and we can do another filter here. Capture for Wireshark 1/1, or let me hit the traffic from this PC, part of the PC like client PC, this one. Perfect, guys. So one IP had the capacity to handle 64,000 connections. So अगर हमने यहाँ पर भी देख रहे हैं, अगर second PC से भी try कर रहे हैं, see F5 is going to the same IP 222 as the source while communicating the backend server. तो यहाँ पर देखो 22 ही यूज हो रहा है while communicating with the backend server like server 1, server 2, server 3. So this is how we know SNAT pool work, guys, and it is very widely used concept. So आपको I hope कि this is informative, this is knowledgeable for everybody. हम इसका स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं. फॉर दैट वी नीड टू कम हियर गाइस, एंड इफ यू कम टू स्टैटिस्टिक्स एंड हियर इफ यू सिलेक्ट लाइक एसनेट पूल्स. सो देखो गाइस, ये स्नेट पोल हिट करा जो हमने क्रिएट किया है, एंड दिस इज द इन कनेक्शन लाइक बिट्स इन बिट्स आउट, पैकेट्स इन पैकेट्स आउट, current connections maximum 2, total 31. So this is how we can see the module, we can say like statistics related to SNET pools which we have configured it, right? So that's it about the SNET pool in F5 LTM. So this is the type, another type of SNAT. So first we have covered like automap, second is SNAT pool. Upcoming session will cover another types. So I hope this session is informative, knowledgeable for everybody. If you like my efforts, please share this video, share the channel, like, subscribe it as much as possible because this series is totally free, guys. And we don't need to pay anything. अपने circle में share करो because there are so many people who are searching good content in free. उनको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो आई ओनली रिक्वेस्ट टू शेयर एज मच एज पॉसिबल. थैंक्स एवरीबॉडी, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम.